Hello everyone, welcome back to my channel. So today I want to share you my beautiful experience visiting a Marriott luxury hotel and enjoying an unforgettable dinner. So that's the entrance look of this hotel. That's amazing as you can see. So that's the tree, Christmas tree, that's beautiful. So, from the moment I entered the hotel, I felt elegance, comfort, and calm. The atmosphere was very classy. And again, the atmosphere was very classy with beautiful lightings, stylish interiors, and peaceful environment. This truly defines luxury. See my son enjoying a lot. So we take few chocolates from this decoration. We ask her to give some chocolates to my son. It was rupees 750. This are decorations of chocolates and biscuits. That's amazing. That's the another side of this hotel. That's the dinner banquet. Another side, if anyone wants to drink. Sitting arrangement was very less, but mostly in restaurant and cafe. So outside, only few sofas are there. Anyone wants to sit. So that's female restroom. See, there are so many chairs in the restroom. You can't believe it's a restroom. That's amazing. So whenever I go, I spend 10 to 15 minutes to glow up again, my face and fresh up and everything. See, Mevan is dancing. It's also like luxury hotels and luxury interiors. He's enjoying and dancing. So we feel little hungry. So first we take black coffee and milk coffee for my husband, and we click some photos of Mevan. उसको बस यहाँ से वहाँ दौड़ता रहता है, ढंग से बैठता नहीं है. तो उसको फ़ोटोज़ क्लिक कराने का बिल्कुल नहीं पसंद, बट एज़ ऑलवेज़ मैं हमेशा उसको फोर्स करती हूँ, क्योंकि ये एक ट्रू रीज़न है कि मेरे इंस्टा पर भी फ़ैन है, बहुत अच्छे खासे व्यूज़ भी आते हैं, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ माई सन. और यूट्यूब पे भी मेरा जो एक तो वीडियो वायरल हुआ है वो मेरे सन का है. सो आई लव माई सन, ही इज़ हेल्पिंग मी टू make my videos more viral. And so let's go to the food counter first. This drink bottles, there are so many bottles. If anyone loves to drink. And the next one is the food counter. So there are different type of ice creams, flavors. I love chocolate only. So here are the scoop it up. You can see white milk chocolate, dark chocolate, and some nuts of that also.
That's so cool. And this all the sweets. Mew loves sweets. He can't control. He just want everything on time. I just want to eat this as he is a kid. So ये है मालपुआ जिसको स्वीट बहुत पसंद है. He loves that. That's the chocolate and another trap. These are some cookies and cupcakes and chocolate glasses. And that's another cheesecake with some dry fruits cake. There are so many different types of cakes. Mew was very happy and he's enjoying. और गाइस उसने इतनी सारी केक्स खाई है. अभी हम यहाँ पे बाहर निकले तो हम उसको मना नहीं कर सकते, तो उसको थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गया था. बट गाइस बाहर निकले तो चलेगा. क्योंकि शुगरी प्रोडक्ट से उसको तुरंत ही उसकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, उसको खांसी हो जाती है. सो दैट्स द हेल्दीएस्ट सूप, कैरेट सूप. These are some breads, different type of breads and paos. That's the chutney. If anyone wants different types of chutneys and tastes. He always can't control his feelings. I just want this. I just want this. So that's some healthy salads. I'll show you in my next video कि हमने कितना सारा खाना खाया. So that's the all sweets and everything. My mother told me don't show me one while eating. उसको नज़र लग जाती है बहुत जल्दी. This all the shakes for desserts. That's chocolate and strawberry, and another side that's the salad and corns and everything. Healthy foods, broccolis and capsicum, corns, everything. That's my favorite. Dragon fruit. That's watermelon. Also my favorite. Grapes, pineapple. एंड पपाया माई मोस्ट फेवरेट, जो डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाता है. गाइस यू डोंट बिलीव, मैंने सिर्फ फ्रूट्स खाए हैं, ओनली फ्रूट्स. क्योंकि बार बार तो बॉम्बे आना होता नहीं, ना ही ये वाले रेस्टोरेंट में. ये सारा सी फूड है, हमने कुछ भी नहीं खाया. बट जो सी फूड लवर्स है उनके लिए मैं ऐसे शो करती हूँ. दैट्स द फिश, दैट्स बिफ. सो दिस ऑल आर द बिस्किट्स. And another side it's pizza making, sauces and everything. You have to make this pizza by yourself. You can't take anyone's help. That's onions and chutneys and lemons, green chutney, mayonnaise, dahi vada and everything. So many options. What should I eat? I'm still confused. क्योंकि आप खा ही नहीं पाते इतना सारा गाइस. Am I true? आप नहीं खा पाते. सो ये कुछ नॉन वेज है, मुझे नहीं पता. मुझे लगा पनीर चिली जैसा कुछ होगा. फिर मैंने पढ़ा कि ये मुर्ग फ्राई, मुर्ग समथिंग, ये सब नॉन वेज है. तो मैं वहाँ से फटाफट से भाग गई एंड अनदर काउंटर पे गई. सो यहाँ पे भी सब मिक्स्ड था. ये मुझे हरा भरा कबाब लेना था. और ये इंडियन है सब कुछ, समोसा एंड कचौरी एंड एवरीथिंग. ये हमको अपने डिसाइड करते वैसे बना के देते हैं. सो अनदर काउंटर वॉज totally non-vegetarian, meat and everything. So I skipped it again guys, and after we take little bit of dinner, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही का बोला था और पर पर्सन तो सिर्फ आकाश ने लिया था, और उसमें से आकाश और मेवान ने खाया था क्योंकि दोनों उसके किड्स उतना सारा नहीं खा पाते. और मैंने अलग से मेरे लिए सूप मंगवाया था क्योंकि पर पर्सन इट वॉज 2500, तो 5K स्पेंड्स करना इज़ नॉट गुड. एंड फाइनली आफ्टर फ्यू मिनट्स वी गोइंग बैक टू माई होटल एंड या we enjoyed a lot guys. Thank you so much for watching.
So it was nice experience in JW Marriott. You should definitely visit when you are going to Mumbai.